Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to look the summary of chapter number 2. Let me just elaborate what we have discussed in our previous videos. If you haven't watched that, go watch it. Alright, और फिर भी अगर कोई वीडियो रह जाती है तो I promise I'm gonna upload that after this video with you. I am just checking. Okay, we have done our cathode rays, discovery of electron, protons and neutrons. We have done that. Okay, then we have done their experiments. Alright, cathode rays, anode rays, discharge tube experiment. Alright, we have done that experiments. Then we have done our Neil Bohr atomic model, and we have done Rutherford J.J. Thomson atomic model. Then we have done our spectrums. We have done our spectrums, continuous spectrum, discontinuous spectrum, line spectrum, absorption spectrum, and emission spectrum, hydrogen spectrum, Lyman series. We have done hydrogen spectrum. Up now hydrogen spectrum has all the series, so सारी series we have done, right? Then we have done our Planck. We have done our Planck's quantum theory. I think मुझे याद आ रहा है we have not done this. So I'll check that. I guess we have done. Yup. Then we have done our X-rays, how X-rays is being produced. That we're gonna revise. Alright. Then we have done our production of the X-rays, properties, uses, Mosley's law भी मैंने आपको X-rays के टॉपिक के अंदर ही बता दिया था. That Mosley told about the wavelength of the X-rays produced from the anode, ठीक है, from the gold foil. Alright. Then we have done our radioactivity. We have done our radioactivity topic. Okay. Then we have done its uses, types, alpha, beta, gamma, radioactivity के types ये थे हमारे पास. Then we have done our quantum numbers. Recently we have completed our quantum numbers. जिसके अंदर we have done our principal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Spin हो गया. Then we have azimuthal quantum number. Alright, ये सारा हमने कर लिया था in shapes too. Alright, and electronic configuration we have done. So for today's video, what we are going to do, let me just show you what we have done. जो मेरे पास मटेरियल रखा हुआ है, this was the electronic configuration, right? I'm so sorry. This was the electronic configuration, अफबास principle, quantum numbers, ये सारे हमने कर लिए थे. Hertz, ये electronic configuration के अंदर आए थे, ठीक है? We have all completed this. Now we are about to look at the summary of today's topic, that what we are going to discuss. Firstly, I want you to look at this very properly, then
I'm so sorry for the gap. Okay, now we're going to start. ठीक है? So, what is atom? Atom क्या होता है? Let's just look that. Atom is a complex organization of a matter and energy, and it is smallest particle of any matter which may or may not exist free in the nature and take place in the chemical reaction. Alright? Atom. Atom is the smallest and the basic particle. This is atom. This is the smallest and basic particle. ठीक है? Of any matter. बेसिक पार्टिकल जिससे मैटर बनता हो. मैटर हर वो कोई चीज़ होती है दैट ऑक्यूपाई मास, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज मास. मैटर हर एक चीज़ होती है इस दुनिया में. जो भी बॉडीज हैं दैट ऑल आर मैटर. अवर अर्थ इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस, एक जगह घेरती है. राइट, तो दैट इज ऑल्सो अ मैटर. ठीक है. Now we are going to look. Acha, in our book, the J.J. Thomson Rutherford theories are not being defined, but in my videos we have done that. So first of all, Bohr atomic theory. Bohr atomic theory said that the atoms having the fixed number of circular orbit in which electron revolves, an electron required from jump lower. All right. बोहर ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. और जो इलेक्ट्रॉन लोअर से जाता है, फॉर एग्जांपल के इज़ अ लोअर. यस एग्जैक्टली, के इज़ अ लोअर. तो के से जब वो एल पे जाएगा, के से विल गो टू एल, तो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल लूजेज एनर्जी विच रिटर्न्स टू लोअर ऑर्बिट. लोअर से हायर पे जाएगा तो इट विल लूज एनर्जी, लूज करेगा. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट लोअर शेल टू हायर ऑर्बिट, लोअर के, देन एल, देन एम, देन एन, टोटल वी हैव 7 शेल्स. ठीक है. तो फ्रॉम के टू एल देन एम, तो ऐसे ऐसे ऊपर से विल गो डाउन. तो एनर्जी विल बी लूज, एनर्जी वो लूज करेगा क्योंकि एक जगह से जाने में इट रिक्वायर्ड एनर्जी. ऑफ कोर्स एनर्जी तो लूज करेगा ना. तो दिस वाज ऑल टोल्ड बाय बोहर एटॉमिक मॉडल. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है. ये बहुत जेंटल चलता था मेरे साथ ऐसा कुछ. Everything was just so gentle, but that's okay, no problem. Okay. When it comes to this continuous spectrum, it is produced when a beam of white light is passed through a prism. This spectrum is consists of a band of 7. How does continuous spectrum is made? Visible light, when a visible light is being passed to the prism. Prism is an object. ठीक है. पास करती है प्रिज्म थे. दिस स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस ऑफ बैंड, 7 कलर्स में निकलती है. जो स्पेक्ट्रम निकलेगा दैट वुड बी इन 7 कलर्स एंड दैट वुड बी वॉयलेट, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, दैट वुड बी इन 7 कलर्स. Visible light, visible ray would be passing through a prism. एक बैंड की तरह निकलेगा, यूं ऐसे निकलेगा, इस तरह से बैंड की तरह. So this is known as continuous spectrum, जो कि हमारे पास सन से निकलता है. ठीक है. Example of continuous spectrum is sun. Now when it comes to absorption line spectrum,
It is a continuous of the series of dark line with a bright background and obtained when a beam of a light is passed through a normal material. What does this mean? I know ये बहुत प्यारा लग रहा है but we have to remove it. I'm so sorry. Just kidding. Alright. तो absorption spectrum के अंदर हमारे पास क्या होता है? Basically, it is consist of dark lines के अंदर and it has a white background होता है. स्पेक्ट्रम का ही बता रही हूँ, ठीक है. और जब इसके ऊपर से कोई बीम पास होती है तो इट विल वो एब्जॉर्ब कर लेता है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्पेक्ट्रम निकलता है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वुड बी इन द कंटिन्यूस फॉर्म, लाइन स्पेक्ट्रम वुड बी इन द लाइन फॉर्म, और हम उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एमिशन स्पेक्ट्रम. Emission spectrum. The emission spectrum is consist of the series of bright lines that was dark. ठीक है. Absorption जो कि हमारे पास dark lines में हो रही थी that was absorption in spectrum, but the spectrum that is continuous from the series of bright light with a dark background with a bright background. ठीक है. both के अंदर difference आ गया. It is obtained when the light emitted from a solid or a discharge tube. Discharge tube, we know that. What was discharge tube? Discharge tube was a tube by which we had discharge tube जिसमें से हमने experiment किया था इलेक्ट्रॉन का हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना डिस्चार्ज ट्यूब से. तो उसमें से हमने जब पास किया तो वी गॉट स्पेक्ट्रम एंड देयर वाज एमिशन स्पेक्ट्रम. ऑलराइट. नाउ spectrums of hydrogen, these are the types of the spectrums of hydrogen. ठीक है. तो we have discussed that in very detail. Go watch that video. स्पेक्ट्रम की बात की है. So first of all, Lyman series. Lyman series are being formed when the electron falls from the n to 2, 3, 4 to n1, that is equal to 1 level. This series lies on UV ultraviolet radiation. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि when the जब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे 7654 के पे आके गिरेंगे तो that spectrum would be what? That spectrum would be Lyman series. उसको हम Lyman series कहेंगे. ठीक है. Then when it comes to बाल्मर सीरीज, मेरे सर कहते हैं बाल्मर सीरीज. ओके, ये भी सही है. बाल्मर सीरीज it is formed when the n2 मतलब शेल का बता रहे हैं, क्योंकि we have discussed that n is the representation of बनाने चलते हैं get destroyed. n is the representation of k element. K L M N O P Q 7 होता है. ठीक है. तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. याद आ गया? ऑलराइट. तो when it comes to बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के अंदर what happen is that, अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी भी दिया हुआ, तो यू कैन कंसिडर दैट द इन्फिनिटी एज वेल. ये मैं पहले से बिल्कुल बराबर दिख रहा था. तो when the electrons fall from PQR to L, जब L पे गिरते हैं that series
इज नोन एज बाल्मर सीरीज। के पे गिरते थे, तो दैट वाज नोन एज स्लाइमन सीरीज। अच्छा, एंड दिस सीरीज लाइज ऑन द विजिबल रीजन, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम टू Passion series, तो that will be falling from K हो गया हमारे पास M से गिरेंगे इलेक्ट्रॉन and there would be the region। अच्छा, IR इंफ्रारेड जो होंगी that had a region, मिड रीजन होगा, नियर रीजन होगा, फार रीजन होगा। नियर रीजन के अंदर हमारे पास पैशन सीरीज गिरेंगी, मतलब दिस वाज द नेम, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये कोई स्पेसिफिकली कोई नाम दिया हुआ है बस। But when it comes to bracket series, so that electron will be coming from K, L, M, N से अब गिरेंगे to so on, and this series lie in the mid region of IR, ठीक है। Now Puffin series, what was the condition of the Puffin series? It was that when the electron jumps from N6 7 to 5 5th level, जैसे हमारे पास के एलिमेंट, नाउ पी से इलेक्ट्रॉन विल फॉल टू के एलिमेंट, ठीक है। एंड दिस सीरीज वाज नोन एज पार IR सीरीज, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू X-rays have the shorter wavelength and higher penetration electromagnetic radiation. These are produced when fast moving electron hit to a metal anode in the discharge tube. X-rays कैसे बनती थी? When in any heavy metal, जो भारी मेटल जो होता था स्ट्राइक करता था, भारी मेटल होता था, when they strike, तो हमारे पास एक्सरेज बनती थी। When it comes to radioactivity is the phenomena emission of the rays, heavy metal में से रेजेस का निकलना, so that is known as radioactivity, ठीक है। Alright, now we are going to talk about alpha beta rays. Alpha have the positive charge, they deflect towards negative pole because it has a positive charge. When it comes to beta consists negative charge and deflect per positive pole. Gamma has the shorter wavelength and alpha has the largest wavelength and less penetrating power alpha के पास। Gamma which can pass through electric and magnetic field without any reflection because it has high penetration power. And the एक स्पीड ऑफ लाइट भी था कुछ, गामा इज अ प्योर एनर्जी। हाँ, गामा की जो पेनिट्रेशन इज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। Principal quantum number is denoted by n. It is described the size and the energy of orbital. Elemental quantum number was dedicated by L को ज़्यादा ही मार्क कर है ना, चलो चेंज करते हैं। L and it describes the shapes of the orbital. Magnetic quantum number indicated with M and it describes the orientation, मतलब X, Y, Z, axis बताता था, ठीक है। Spin quantum number is indicated by S and it describes the spin of the electronic orbital. Orbital is a space around where the maximum, अच्छा, let me tell you, please do not mark on the MCQs जहाँ पे orbital option दिया हुआ and they ask you where the maximum number of the electron present, shell, subshell या orbital, the answer would be always orbital, ठीक है, because orbital is a space around the nucleus where the maximum number of the electron is possible, ठीक है। Electronic configuration is the distribution of the electron and availability of subshells. ये भी we have done. And polyexoration principle state that in an atom no two electron have the same set of energy. All right, सही है। मुझे ऐसा लगा ये पेज ना कट गया है थोड़ा बहुत।
But a lot more remain. Let me just check. I feel like now in the next videos, inshallah. Acha, Afwa principle we have done. So it was just that. Acha, in the next video, I hope that is clear. In the next video, hopefully we have done the key points from our book. In the next video, we are gonna be solving the MCQs exercise. So be ready. Alright. Goodbye.